morning, everyone. Am I audible? Hello. Hello, am I audible? Hello. 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 Hello, am I audible now? Yes, sir. So, what is the last topic that we had done? What was the last topic that I had taught you? Hello. Hello. Please respond, anyone. What is the last topic that I have taught you? Sneha? Sneha? Sneha, please respond. Deepak? Yes, sir. What is the last topic that I have taught you? लिखे थे ना? सर सिलेबस बता रहे थे सर। हाँ, सिलेबस के बाद और एक चीज बताए थे, इसके बाद वाला क्लास नहीं किए थे क्या? सर वो क्लास नहीं किए थे। कौन किया था? कोई तो किया होगा। यस सर। हाँ सौरभ, लास्ट टॉपिक क्या था? सर नेचुरल गैस। हाँ, एक मिनट रुको। Yes, so natural gas was the last topic that I have taught you. Okay, so now write the next topic, crude oil. Crude oil, ठीक है? लिखो। According to energy statistics, 2011 on March 2010, comma, there were a total of 20 refineries. 20 refineries. What, sir? There were a total of 20 refineries. रिफाइनरी, वो जो ऑयल निकालते हैं ना, रिफाइनरीज का, REFINERIES. There were a total of 20 refineries in the country. In the country, sorry.
out of which 17 in the public sector, out of which 17 in the public sector and 3 in the private sector, and 3 in the private sector. Jitendra Kumar, please repeat the last sentence. Jitendra Kumar, please repeat the last sentence. Yes, sir. So, 20 refineries in the country, out of which 17 in the public sector and 3 in private sector. Okay, good. Full stop. Total installed crude oil. Total installed crude oil. Total installed crude oil refining capacity. Total installed crude oil refining capacity in the country. Total installed crude oil refining capacity in the country at the end of March 2010. At the end of March 2010 was 178 million tons per annum. Was 178 million tons per annum. Okay. Full stop. India produced roughly 880,000 barrels, roughly 880,000 barrels per day of total oil in 2009. Of total oil in 2009 from over 3,600 operating oil wells. Per day was What, sir? India produced roughly 880,000 barrels per day of total oil in 2009 from over 3,600 operating oils well. मतलब 3,600 ऑयल वेल से 880,000 बैरल्स पर डे ऑयल निकाला गया है 2009 में. ठीक है? Shall I repeat? Okay. Full stop. Yes, sir. Approximately 680,000 barrel per day was crude oil, and the remainder was other liquids and refinery gain, and the remainder was other liquids and refinery gain. Full stop. Monit Kumar. Yes, sir. लास्ट सेंटेंस क्या बताएं, बोलो. Approximately 680,000 barrel per day was of crude oil, and the remainder was Other liquids and refinery gain. Very good. Full stop. The EIA EIA का फुल फॉर्म कौन बताएगा? पहले बताए थे पहले क्लास में. स्नेहा you are not responding. Okay, so Sneha is marked absent for this class. Now the EIA expects India to become the fourth largest net importer of oil, to become the fourth largest net importer of oil in the world by 2025. To become the fourth क्या बोले largest, सर? बोल रहा हूं, to become the fourth largest net importer of oil in the world by 2025, behind the United States, China and Japan.
और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द EIA expects India to become the 4th largest net importer of oil in the world by 2025, behind the United States, China and Japan. Okay, so that's for conventional energy resources. ठीक है. Now the next topic as per the syllabus is non-conventional energy resources. ठीक है. So what is the definition of non-conventional energy resources? Anyone? Okay, who are the participants? Sushil Soren. Sushil Soren. See, if you are not attentive in the class, there is no need to be in the participant list, because anyway you won't be get mark present for the class. Okay, so it's needless to stay if you are not responding. Mohammad Shadan Akhtar. Even if you don't know the answer, then respond and tell, sir, I have no idea or I don't know the answer. Okay, it is not necessary to give me the answer, but at least you should respond. Mohammad Shadan Akhtar. Yes, sir. Can you please define what is non-conventional energy resources? बहुत easy है. अपने words में बताओ. Yes, sir. सर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वैसा एनर्जी है सर जो वक्त के साथ मतलब खत्म होता जा रहा है सर, जैसे कोल वो नेचुरल conventional होता है, non-conventional नहीं. नहीं सर, विंड एनर्जी सर, सोलर एनर्जी जो हाँ. मतलब कभी खत्म नहीं हो, रिन्यूअल होते रहे. Okay, fine. So please write down the definition. Energy generated by using wind, comma solar, comma small hydro, comma tides, comma geothermal heat, and biomass is known as non-conventional energy. Full stop. All these sources are renewable process of energy generation. And do not cause environmental pollution. Please repeat. Okay. A renewable process of energy generation and do not cause environmental pollution. Anima Kumari, please repeat the definition. Energy generated by using wind, solar, small hydro, tides, geothermal heat, and biomass is known as non-conventional energy. Non-conventional. ठीक है? CONVENTIONAL. ठीक है? All these sources are renewable process of energy generation and do not cause environmental pollution. Very good. Thank you. So, write the next topic. Wind energy. जैसे हम लोग डेफिनेशन के बाद कोल के लिए लिखे थे, ठीक है, कोल एंड लिग्नाइट के लिए, वैसे ही इसके बाद सब पॉइंट दे के लिखो विंड एनर्जी. ठीक है, उसके बाद लिखो अंडर विंड एनर्जी करके लिखो. तुम लोग का देखो, तुम लोग का सिलेबस में एक्चुअली है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड देयर अवेलेबिलिटी इन इंडिया. ठीक है, ये अगर सिलेबस होगा तो ये पहला पॉइंट है.
तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिफाइन कन्वेंशनल, डिफाइन नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, जो कि मैंने डेफिनेशन दे दिया है। और बोलेगा कि write about their availability in India, or what is the condition of the conventional and non-conventional sources of energy in India। तब ये पॉइंट्स तुम लोग लिखोगे, ठीक है, एज पर द मार्क्स। अगर मार्क्स 2 मार्क्स का रहा तो बिल्कुल छोटा पॉइंट्स में लिखोगे, 1-2 पॉइंट्स लिखोगे। अगर मार्क्स 4 मार्क्स का रहा तो और थोड़ा सा पॉइंट्स लिखोगे, और अगर 6 मार्क्स का रहा तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके फाइन। क्लास में रहोगे तो क्लास के बाहर और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लास में ही सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। जब पढ़ना ही पड़ेगा तब क्लास में ही पढ़ लो, बात के लिए क्यों बचा के रखो। फाइन, राइट, विंड एनर्जी। तो यही विंड एनर्जी का अवेलेबिलिटी क्या है, या व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। लिखो, द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर, द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इन इंडिया, the development of wind power in India began in the 1990s. Began in the 1990s. Full stop. India has the fifth largest. India has the fifth largest installed wind power capacity. India has the fifth largest installed wind power capacity in the world by February 2011. Full stop. By February 2011. सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, India has the fifth largest installed wind power capacity in the world by February 2011. 2011 तक इंडिया 5वां लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी बन चुका था, ठीक है। आफ्टर फुल स्टॉप, राइट, according to the MNRE, according to the MNRE, that is Ministry of Renewable Energy, ठीक है, according to the MNRE, comma, the potential of wind power in India, the potential of wind power in India is approximately 46. Repeat, sir. Yes, ma'am. According to the MNRE, comma, the potential of wind energy in India is approximately 46092 megawatt MW. 46092 megawatt, and installed capacity of wind power, is 14550 megawatt. 14550 megawatt by the end of March 2011. By the end of March 2011. Full stop. Major states with higher capacity and wind power potential are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, and Maharashtra. सर रिपीट सर। Major states with higher capacity and wind power potential are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, and Maharashtra. ठीक है। संजय कुमार, लास्ट
लास्ट लाइन रिपीट करो. By the end of March 2011, major states which has higher capability of wind power potential are Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, and Maharashtra. Okay, very good. Now, solar energy. Next वाला लिखो, solar energy, very important. ठीक है, solar energy. Sir, can you repeat the full form of NMRE? हाँ, MNRE. M for ministry, MN for ministry, और RE के लिए of renewable energy. Ministry of renewable energy. ठीक है, तुम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल से हो तो MNRE का फुल फॉर्म यू शुड नो, इंटरव्यू में पूछा जाएगा. ठीक है, फाइन. नाउ राइट सोलर एनर्जी. ठीक है, राइट डाउन. इंडिया इज blessed with BLESSED, blessed. India is blessed with rich solar energy resource. India is endowed with rich solar energy resource. Full stop. The average intensity of solar radiation received on India is 200 megawatt per kilometer square. 200 megawatt per kilometer square. Full stop. The amount of solar energy produced in India, is merely 0.4%. Compared to other energy resource. Full stop. The grid interactive solar power in March 2011 was only 39.66 megawatt. Full stop. Sushma Kumari. Yes, sir. Last line, please repeat करो. Last line repeat करो. The grid interactive solar power in March 2011 was only 39.66 megawatt. Okay, very good. Full stop. According to Yes, EA. Okay, sir. thank you. बोलो. The grid interactive solar power in March 2011 was only Okay, thank you. Next लिखो after full stop. According to EAI, as of March 2011,
as of March 2011, comma, India is currently ranked number one. India is currently ranked number one along with the United States in terms of installed solar power generation capacity. India is currently ranked number one along with the United States in terms of installed solar power generation capacity. In terms of Installed solar, in terms of installed solar power generation capacity. In terms of installed solar power generation capacity. Ayush Kumar. Yes, sir. बोलो लास्ट वाला क्वेश्चन बोलो. Sir, according to EIA, as of March 2011, India is currently ranked number one along with the United States in terms of installed solar power capacity. Installed power generation capacity. Okay. ठीक है. Then write down biomass energy. Biomass energy. ठीक है. बायोमास एनर्जी क्या होता है? Anyone knows? Does anyone know what is biomass energy? Okay, fine. बायोमास वो एनर्जी होता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग डिराइव करते हैं. मतलब जब हम लोग कोई ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सब्जी का छिलका हुआ या कोई कागज हुआ, ठीक है, उसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो उससे गैस निकलता है. ठीक है, तो उस गैस को हम लोग चूल्हा जलाने के लिए यूज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी. ओके, हम लोग ये बायोमास को एक्चुअली और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो बाद में सिलेबस में दिया हुआ है. ठीक है, सो राइट डाउन according to EAI, India has biomass production of 546 million tons of 546 million tons per year from the agricultural sources alone. From the agricultural sources alone to generate electricity at a capacity of 17,981 megawatt. 17981 megawatt. 17981 megawatt. Full stop. According to MNRE, Subhashish, what is the full form of MNRE? Subhashish, what is the full form of MNRE? Don't know, sir. क्या don't know? अभी तो बोले. Ministry of Renewable Energy. लिखो. Ministry of Renewable Energy. According to MNRE, as on March 2011, comma,
India is very rich. India is very rich in biomass energy, and has a potential of 16881 megawatt. 16881 megawatt. 16881 मेगावाट. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में एग्रो रेसिड्यूज एंड प्लांटेशन. एग्रो रेसिड्यूज एंड प्लांटेशन. एग्रो रेसिड्यू मतलब जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन का जो छिलका होता है, जो स्किन होता है, उससे जो उसको एग्रो रेसिड्यूज बोलते हैं. या फिर सोचो जब वो क्या बोलते हैं, जो चावल को हम लोग ये करते हैं, प्लांट से जो छुड़ाते हैं, तो वो जो बचा हुआ रहता है वो सबको एग्रो रेसिड्यूज बोलते हैं. ठीक है, एंड प्लांटेशंस. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा दो, फिर लिखो 5000 मेगावाट. 5000 मेगावाट ब्रैकेट में लिखो, 5000 मेगावाट ब्रैकेट में लिखो बैगेस, BAGASSC, BAGASSC, बैगेस कोजेनरेशन. बैगेस कोजेनरेशन. बैगेस किसको बोलते हैं? बैगेस होता है जो गन्ना से जूस निकालते हैं हम लोग, तो निकलने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको बैगेस बोलते हैं. ठीक है, द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम अ शुगर केन. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर लिखो एंड 2700 मेगावाट. एंड 2700 मेगावाट. फिर ब्रैकेट में लिखो एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट. एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद एक कॉमा दो. out of which only 2860 megawatt is installed in various form. Out of which only 2860 megawatt is installed in various form. ठीक है, अच्छा इस लिंक को फिर से ज्वाइन करो, अभी ये बंद होने वाला है. ठीक है, so immediately join.